हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति और आज हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस देख चुके हैं जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आप जिस भी जनरल स्टडीज़ या जीके बेस्ड एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, the percentage by which the money the borrower pays back exceeds the money that was borrowed is called as A. Bank rate, B. Nominal interest rate, C. Real interest rate, D. Terms of credit. So the answer is B. Nominal interest rate. बैंक रेट इसलिए नहीं होता। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वो रेट है जो कि सेंट्रल बैंक चार्ज करता है जब वो फंड्स लेंड कर रहा है कमर्शियल बैंक्स को। रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है? वन दैट हैज़ बीन एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्टिंग द रियल कॉस्ट ऑफ फंड्स टू द बोरोवर एंड द रियल यील्ड टू द लेंडर. This real interest rate can also be nominal rate minus the inflation rate. So here the answer is B, that is the nominal interest rate. Next, the increase in private investment spending induced by increase in the government spending is known as A. Crowding in, B. Deficit financing, C. Crowding out, D. Pumping out. So the answer is A. Crowding in. Crowding in is a phenomena that occurs when higher government spending leads to an increase in economic growth, therefore encourages firm to invest due to presence of more profitable investment opportunity. यानी कि क्राउडिंग इन में गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है एंड देयरफॉर जो फर्म्स हैं वो इन्वेस्ट करेंगे बिकॉज ऑफ मोर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़. इसके जस्ट ऑपोजिट में होता है क्राउडिंग आउट, जहाँ पे गवर्नमेंट ग्रेटर इंक्रीज गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन अ सेक्टर ऑफ मार्केट इकोनॉमी सब्सटेंशियली अफेक्ट्स द रिमाइंडर ऑफ द मार्केट ईदर ऑन द सप्लाई और डिमांड साइड ऑफ द मार्केट. यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो क्योंकि लोन वगैरह ले रही है तो इंक्रीज इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं गवर्नमेंट की बोरिंग के वजह से, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाती है एंड प्राइवेट सेक्टर के लिए इन्वेस्ट करना मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ द हायर इंटरेस्ट रेट. और डेफिसिट फाइनेंसिंग जो होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग इज़ अ प्रैक्टिस इन विच गवर्नमेंट स्पेंड मोर मनी देन इट रिसीव एज रेवेन्यू. जो उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे ज़्यादा गवर्नमेंट स्पेंड करती है. सो इन दिस क्वेश्चन आंसर इज़ ए, क्राउडिंग इन. Which one of the following statements not correct? A. Real GDP is calculated by valuing output of different years at common prices. B. Potential GDP is the real GDP that the economy would produce if its resources were fully employed. C. Nominal GDP is calculated by valuing outputs of different years at constant prices. D. Real GDP per capita is the ratio of real GDP divided by population. So this statement यहाँ पूछी गई is not correct. इनमें से कौन सी है? So the answer is C. Nominal GDP is calculated by valuing output of different years at constant prices. This one is a wrong statement. क्यों? क्योंकि nominal GDP जो ली जाती है वो current year prices पे होती है. Value of goods यहाँ पे जो लेंगे वो current year prices पे होगी. Question. Which of the following items not covered under GST? A. Cosmetics, B. Medical grade oxygen, C. Jewelry, D. Petrol. Correct answer is petrol, which is not covered under GST. Next, which of the following inputs required in less quantity in case of non-farming activities? A. Land, B. Labor, C. Capital, D. Raw material. So in case of a non-farming activity, which one of the input required less quantity? Land. A is the answer. Which one of the following does not influence quantity demanded for a good? A. Goods own price, B. Price of complementary good, C. Price of substitute good, D. Prices of inputs into production of the good. So here the answer is B. Price of complementary good. Next, which one of the following would be considered as foreign direct investment? A. A foreign company buying shares in the stock exchanges in India. B. A foreign country pension fund investing in Indian stock markets.
C. A foreign merchant banker buying shares from Indian stock market. D. A foreign entity setting up educational institution in India. सो यहाँ पे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का केस है वो है डी, जहाँ पे एक फॉरेन एंटिटी आके अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डेवलप करी है इंडिया में. एफडीआई व्हेन द कंपनी टेक्स कंट्रोलिंग ओनरशिप होना चाहिए इन अ बिजनेस एंटिटी. देयर शुड बी मैनेजमेंट, देयर शुड बी ओनरशिप इन अनदर कंट्री. जबकि बाकी जो 3 स्टेटमेंट हैं ऊपर के, जहाँ पे दे आर बाइंग द शेयर्स इन द स्टॉक एक्सचेंज, दे आर इन्वेस्टिंग इन द पेंशन फंड्स, दे आर बाइंग शेयर्स फ्रॉम द इंडियन स्टॉक मार्केट, ये सारे केसेस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के हैं. In case of FII, investors are those institutional investors which invest in the asset belonging to a different country. Which of the following factors signify monopolistic competition? A. Differentiated products. B. Large number of buyers and sellers. C. Barriers to entry. D. Homogeneous products. Select the correct answer using the code. So, A statement that is 1 and 2, जो फर्स्ट A और B स्टेटमेंट्स हैं दोनों करेक्ट हैं. दैट इज़ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. ये 2 फैक्टर सिग्निफाई करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज़ अ टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर मेनी कंपनीज आर प्रेजेंट इन एन इंडस्ट्री and they produce similar but differentiated products. None of the company enjoy monopoly and each company operates independently without regard to action of other company. Infant mortality ratio of which one of the following countries is comparable to that of India? A. China, B. USA, C. Sri Lanka, D. None of the above. So here the answer is D. None of the above. Next. Who among the following is the chairperson of the Goods and Services Tax Council? A. Prime Minister of India, B. Union Finance Minister, C. Speaker of the Lok Sabha, D. President of India. Correct answer is B. The Union Finance Minister. Which one of the following statement is not correct regarding the Pension Fund Regulatory and Development Authority? A. It has increased the entry age for the national pension system from 60 years to 65 years. B. Earlier the eligible age to invest in NPS was 18 to 65 years, which has now been revised to 18 to 70 years. C. As per the revised norms, any Indian citizen, resident or non-resident and overseas citizen of India between the age of 65 and 70 years can join NPS. And D. Subscribers can continue or defer their NPS account up to the age of 75 years. यहाँ पे आपको जो स्टेटमेंट बतानी है वो नॉट करेक्ट बतानी है. तो एज पर नॉट करेक्ट स्टेटमेंट दिस इज आंसर C. As per the revised norms, any Indian citizen, resident or non-resident and overseas citizen of India between the ages of 65 and 70 years can join NPS. Which one of the following functions as an autonomic stabilizer in the context of fiscal and monetary policy of an economy? A. Personal income tax. B. Reverse repo rate of a bank. C. Open market operation. D. Bond price. Correct answer is A. Personal income tax. This personal income tax acts as an automatic stabilizer in the context of fiscal monetary policy. 15th. Broadly, both birth and death rates are low in which one of the following stages of demographic transition model? High stage, B. Early expanding stage, C. Late expanding stage, D. Low stationary stage. So answer is D. Low stationary stage. Which one among the following statement is not correct? A. When the economy grows slowly, then its potential, the unemployment rate rises. B. Structural unemployment occurs when jobs are eliminated by changes in demand for particular goods or due to automation. C. Recession in the economy leads to cyclic unemployment. D. At full employment, the measured unemployment rate is negative. यहाँ पे हमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो वो है बी. यहाँ पे बोला गया स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो व्हेन जॉब्स आर एलिमिनेटेड बाय चेंजेस इन डिमांड फॉर पर्टिकुलर गुड्स की वजह से क्रिएट होता है. ऐसा नहीं है. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो मिसमैच बिटवीन द स्किल्स की वजह से होता है दैट वर्कर्स इन द इकोनॉमी कैन ऑफर. वर्कर्स जिस तरीके के स्किल ऑफर कर रहे हैं वो डिमांड में नहीं है. स्किल्स डिमांडेड इन वर्कर्स बाय द एम्प्लॉयर्स वो डिफरेंट हैं. जैसा एम्प्लॉयर्स चाहते हैं स्किल्स और जो वर्कर्स ऑफर कर रहे हैं वो डिफरेंट हैं.
स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ऑफन ब्रॉट अबाउट बाय टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से इस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है. नेक्स्ट, the amount by which the equilibrium level of real GDP exceeds the full employment level of GDP is called A. recessionary gap, B. inflationary gap, C. income multiplier, D. automatic stabilizer. So the answer is B. inflationary gap. For anything to be recognized as money, it needs to have which of the following characteristic? First, act as an intermediate in exchange process. Second, standard unit for quoting prices. Third, must be easily divisible. Fourth, have higher value in alternative uses. Select the correct answer using the code. Answer is C, that is first, second and third statement correct है. यानी कि first says act as an intermediate in exchange process is correct. Standard unit for quoting prices is correct, and must be easily divisible is correct. All three, first, second and third correct. The sectoral share of gross value added for the year 2009-10 to 2018-19 show that the share of service sector in the gross value added in India has increased over the years. Which among the following have driven the maximum increase? A. electricity, gas, water supply and other utility services. B. trade, hotel, transport, communication and services related to broadcasting. C. public administration, defense and other services. D. financial, real estate and professional services. Correct answer is A. electricity, gas, water supply and other utility services. So whatever the share of GVA that has in India has increased over the years is due to electricity, gas, water supply and other utility services. The price declared by the government every year before sowing season to provide incentive to the farmers is called buffer price, B. issue price, C. minimum support price, D. fair sustenance price. द आंसर इज सी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. ये गवर्नमेंट अनाउंस करती है सोइंग सीजन से पहले एज एन इंसेंटिव टू द फार्मर्स, और ये एक लॉन्ग टर्म गारंटी प्रोवाइड करते हैं प्रोड्यूसर्स को कि इवन इन केस ऑफ अ ग्लट प्राइस विल नॉट फॉल बिलो दीज अनाउंस्ड मिनिमम प्राइसेस. The government started large-scale procurement of food grain at the MSP to ensure its intent. Procurement price, these are higher than MSP and are meant essentially for purchase of quantities needed by the government to maintain its PDS and for building up the buffer stock. Issue price क्या होते हैं? Issue price, these indicate prices at which government supplies food grains through the fair prices shop, ration shop. जिस प्राइस पे गवर्नमेंट फूड ग्रेन सप्लाई करती है राशन शॉप और फेयर प्राइसेस शॉप्स के द्वारा. तो यहाँ पे जो इंसेंटिव टू फार्मर्स प्रोवाइड करने वाली बात है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू है. The situation where equilibrium level of real GDP falls short of potential GDP is known as A. recessionary gap, B. inflationary gap, C. demand side inflation, D. supply side inflation. Correct answer is recessionary gap. Recessionary gap is a situation where equilibrium level of real GDP falls short of potential GDP. Next, the axis of total expenditure of government over its total receipt excluding borrowings is known as A. primary deficit, B. fiscal deficit, C. current deficit, D. capital deficit. So answer is B. fiscal deficit. In case of primary deficit is the difference between the current year fiscal deficit and the interest payment on previous borrowing. Exchange rates state the value of one currency in terms of other currencies. Which one of the following statement with respect to the exchange rate of currency is correct? A. floating exchange rates are rates in which the government interferes by buying or selling their currencies. B. fixed exchange rates are rates set by the government decision maintained by the government actions. C. under Bretton Woods system, the exchange rates are floated in terms of rise or fall in price of gold. D. under the classical gold standard, the exchange rate are fixed in terms of price of dollar. यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज रेट्स. यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बी है. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स आर रेट सेट बाय द गवर्नमेंट डिसीजंस मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट एक्शन. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स के अंदर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और फिर सेट करती है रेट्स को.
फर्स्ट स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स जो होती हैं वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता है, वो मार्केट बेस्ड होती है, मार्केट डिटर्मिंड होती हैं। सी स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है, वहाँ कहा गया कि ब्रेटन वुड सिस्टम एक्सचेंज रेट्स आर फ्लोटेड इन टर्म्स एंड राइज ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ गोल्ड। नहीं, वहाँ पे जो है वो पेग किया जाता है करेंसीज को यूएस डॉलर के अगेंस्ट। सो ब्रेटन वुड सिस्टम रिक्वायर करेंसी पेग टू द यूएस डॉलर। डी स्टेटमेंट इसलिए गलत है, उसमें कहा गया अंडर द क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड द एक्सचेंज रेट्स आर फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ डॉलर, जबकि क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में अंडर विच नियरली ऑल कंट्रीज फिक्स द वैल्यू ऑफ देयर करेंसी इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ गोल्ड किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।